सारा मिक्स। तेरे सब्सक्राइबर्स के लिए 4 चांद लगाए। आज दूर है दिल में। आज पूरा Professor Soumik है सुपर गेमर। एपेक्स लेजेंड्स COD मोबाइल GTA 5 को जाने। वो है गेमिंग के दुनिया का प्रोफेसर। किली में आज तक ना देखे जान तेरे तहा। गेम प्रोफेसर Soumik के सुपरस्टार। एपेक्स लेजेंड्स COD मोबाइल GTA 5 को जाने। वो है गेमिंग के दुनिया का जादूगर। गेम ऑन Soumik अपने स्टाइल से दबा के गेम पर पट्टी। इंडियन इंस्ट्रूमेंटल सारा मिक्स। तेरे सब्सक्राइबर्स के लिए 4 चांद लगाए। गेम ऑन Soumik आज दूर है दिल में। आज पूरा Professor Soumik है सुपर गेमर। एपेक्स लेजेंड्स COD मोबाइल GTA 5 को जाने। वो है गेमिंग के दुनिया का प्रोफेसर। किली में आज तक ना देखे जान तेरे तहा। गेम प्रोफेसर Soumik के सुपरस्टार। एपेक्स लेजेंड्स COD मोबाइल GTA 5 को जाने। वो है गेमिंग के दुनिया का जादूगर। गेम ऑन Soumik अपने स्टाइल से दबा के गेम पर पट्टी। इंडियन इंस्ट्रूमेंटल सारा मिक्स। तेरे सब्सक्राइबर्स के लिए 4 चांद लगाए। गेम ऑन Soumik आज दूर है दिल में। आज पूरा Professor Soumik है सुपर गेमर। एपेक्स लेजेंड्स COD मोबाइल GTA 5 को जाने। वो है गेमिंग के दुनिया का प्रोफेसर। किली में आज तक ना देखे जान तेरे तहा। गेम प्रोफेसर Soumik के सुपरस्टार। एपेक्स लेजेंड्स COD मोबाइल GTA 5 को जाने। वो है गेमिंग के दुनिया का जादूगर। गेम ऑन Soumik अपने स्टाइल से दबा के गेम पर पट्टी। इंडियन इंस्ट्रूमेंटल सारा मिक्स।
तेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। हेलो एंड वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। कैसे हो सब लोग और कैसे चल रहा है सब लोगों का दिन? तो आज हम लोग आ चुके हैं विथ सम डिस्कशन रिगार्डिंग द समर गेम्स फेस्ट। एंड जो समर गेम्स फेस्ट हुआ है 1-2 दिन पहले ही हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो उसमें बहुत सारे गेम्स आ चुके हैं। एंड उसमें जो ट्रेलर्स उन्होंने दिया है, कुछ हम लोगों ने कल देखा था, आज कुछ बाकी के देखेंगे। एंड उसमें जो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग आप लोगों को लगता है तो उसके बारे में बताना, तो वो चेकआउट करूँगा। जैसे कल एटॉमिक हार्ट्स 2 देखा हम लोगों ने, बहुत ही बढ़िया लगा। आई थिंक इट हैज़ टू बी द नंबर 1 ट्रेलर अमॉन्गस्ट ऑल द थिंग्स दैट आई हैव सीन। बहुत ही एक्साइटिंग लगा। आई एम रियली होपिंग कि एटॉमिक हार्ट्स 2 लॉन्च हो जाए एंड बहुत बड़ा गेम बने, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट्स वो लोग दिखा रहे हैं बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है वो देख के। And there are some other games like 007 First Light, जिसके थीम से काइंड ऑफ इंस्पायर होके आज का थंबनेल बना है, जो कि उसके लिए भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज ऑफ what I saw with Indiana Jones. Indiana Jones, I think it is a different company that has made. This has been made by IO Interactive, which is the company who have also made Hitman games. So Hitman games हम लोग ने देखा है, recent trilogy जो उन्होंने rebooted या soft rebooted trilogy जो किया है, बहुत बढ़िया handle किया है उसमें. Action and shooting plus the stealth mechanics is definitely one of the best in that. तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जेम्स बॉन्ड भी अच्छे हाथों में है एंड इट विल वर्क आउट वेल फॉर द कंपनी. बाय द वे, हेलो सर, केम छो मजामा? आमी मजामा ये क्या गुजरात बंगाल का क्या यूनिफिकेशन करवा रहे हो? स्वप्निल, बाय द वे वेलकम टू स्ट्रीम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. सर जी, यस्टरडे आई गॉट लेजेंडरी AK-47. अरे क्या बात है, ये फ्री में मिल गया या फिर कुछ स्पिन विन करना पड़ा? अभिशंका, कौन सा? गुड आफ्टरनून सर, हमारे यहाँ सनसेट 7 PM के अराउंड होता है. हाँ, वो तो मैं तो मुंबई में रहता था, तो तुमसे 2-4 मिनट और लेट होता है. हम लोग खेलते थे 6:30 बजे तक, तो आराम से खेलते थे. समर के टाइम पे 6:30 to 6:45 तक क्रिकेट हम लोग खेलते थे, आराम से चला जाता था समर के अराउंड. तो यहाँ पे तो काइंड ऑफ अभी जैसे 6 बज रहे हैं, तो काफ़ी हद तक रात जैसा ही, रात नहीं मतलब अंधेरा ऑलमोस्ट छा गया है. तो वही है कि एक घंटे के आसपास का डिफरेंस रहता है. कोलकाता मुंबई अराउंड 1 आवर का डिफरेंस रहता है. 15 डिग्रीज रहते हैं वो लॉन्जिट्यूडनल सेपरेशन आई थिंक. सो 15 डिग्रीज का डिफरेंस है. सो एवरी लॉन्जिट्यूडनल डिग्री इज लाइक 4 minutes अपार्ट. So 15 degrees means 1 hour, 60 minutes or so. अभी भी 5:40 जैसा उजाला हाँ रहता है. समर का टाइम है ना, समर का टाइम थोड़ा ज़्यादा ही रहता है वैसे भी. तो मतलब जस्ट मानसून आ रहा है, तो क्लाउड्स अगर ढकेंगे नहीं तो अच्छा खासा सनी वेदर जैसा दिखता है. स्वप्निल, फ्री में था, 200 शार्ट्स कलेक्ट करना था. वो आपसे कहा था ना कि लेजेंडरी स्टन बैटन को रिप्लेस करेगा लेजेंडरी AK-47, वहीं से मिला. अच्छा, नहीं मुझे उतना याद नहीं है. मैं बोला ना, मैं उतना फॉलो नहीं करता हूँ. मैं अभी जस्ट जब मौका मिले तब अगर खेल लिया तो खेल लिया. अभी जैसे ब्लैक ऑप्स 6 का खेल रहा था, तो ब्लैक ऑप्स 6 खेल लिया. अब वो कब खेलूंगा नेक्स्ट पता नहीं, मल्टीप्लेयर. एंड मुझे नहीं लगता कि मल्टीप्लेयर खेल पाऊंगा ब्लैक ऑप्स 6 का. मे बी फ्यूचर में दूसरा कोई अगर इंस्टॉलमेंट आएगा कॉर्ड का, तो उसका मल्टीप्लेयर में भी ट्राई कर लूंगा अगर गेम पास वगैरह में आता है तो. कौन सा लेजेंडरी AK-47? वो तो स्वप्निल ही बेटर बता पाएगा अगर वो एक्सप्लेन कर पाए, और तुम अगर रेगुलर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल देख रहे हो तो. अदरवाइज मिलता है जैसे एक लेजेंडरी DRH मिल गया था, रेगुलरली खेलता रहता था. 6 बार आई थिंक लेजेंडरी चाहिए था रैंक्स में, तो वो तो मेरा ऑलरेडी था. आई थिंक 15 बार तो हो चुका है लेजेंडरी इन MPBR एंड ऑल. तो वो 6 बार तो कुछ भी नहीं है. अभी मैं मतलब वो क्या हो गया ना, कैसे थोड़ा मोह माया से दूर हो गया हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल्स. नहीं तो दूसरे गेम्स ट्राई नहीं कर पाऊंगा. एंड एज यू हैव सीन लास्ट 45 days के आसपास वी हैव कंप्लीटेड टन्स ऑफ गेम्स.
टन्स मतलब इतना इतना गेम्स धड़ाधड़ मैंने कंप्लीट नहीं किया है आज तक। और उसमें से एक तो भाई क्लियर ऑब्सक्योर, जिसको लेके आई एम टोटली ऑब्सेस्ड। आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड अबाउट दैट गेम। आई विश आई कुड हैव ओन्ड दैट गेम so that I could play it every day for a few minutes or so. But unfortunately, as the Game Pass ends tomorrow, I won't be able to play it more. Last, I think once I finished the stream of Farlight. So Farlight मैंने complete किया एक महीना पहले कुछ है. Then I started with Warframe. Warframe is also fun, but you have to be uh, initially you have to bear the pain of your fingers because बहुत fast paced है और repeated movement करते करते ना हाथों में दर्द होने लग जाता है. It requires a bit of grind. Warframe, not a bit of grind, I would say a lot of grind rather, but it is fun to play. It is enjoyable. रोबोकॉप बहुत मज़ा आया. रोबोकॉप भी बहुत तगड़ा गेम था. आई रियली एंजॉयड रोबोकॉप. इंडियाना जोन्स डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड गेम्स. बहुत बहुत सही गेम था. आई वॉज एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज्ड. स्टिल वेक्स द डीप खेला मैंने. एक या 2 दिन में ख़त्म ही हो गया था वो. ज़्यादा टाइम नहीं लगा. Then Black Ops 6 campaign was good. Multiplayer was enjoyable. Zombies is so zombies. I don't prefer zombies that much. South of Midnight is okay. It is not the best, but it is not many people I have seen they are bashing the game. It is not that bad. The combat could have been better, but it's fine. The story and the music, it's beautiful. Then you have Claire Obscure. एंड लास्टली वी प्लेड कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3. जुसेंट भी एक है. जुसेंट शायद मैं ऑफ स्ट्रीम खेल लूँ आज. खेल के ख़त्म कर दूंगा उसको. वो छोटा सा गेम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है. फार्टलाइट कब खेलोगे? फार्टलाइट नहीं खेलता हैकेट. मैं फारलाइट खेलता हूँ. फार्टलाइट इज नॉट अ गेम दैट एग्जिस्ट टिल नाउ. तुम चालू करो तो खेलेंगे फिर. मतलब मान के चलो कि इस साल मुझे और 2 या 2 से ज़्यादा लेजेंडरी गर्ल्स मिलने वाले हैं. ओके. फारलाइट को फार्टलाइट बोल रहा है वो जानबूझ के. उसको पता नहीं क्या दुश्मनी है. फारलाइट वालों ने कुछ तो उसका पैसा काटा है. वो ऐसे बिहेव कर रहा है. पता नहीं है कॉर्डम पीसी कब आएगा. पता नहीं. वो चल रहा है, काम तो चल रहा है. दे आर वर्किंग ऑन इट. कॉड वॉरजोन जब आया था, वॉरजोन मोबाइल, तो उसके भी तो वो लोग 2020 के अराउंड से उन्होंने शुरू किया था. एंड वो चालू होते होते आई थिंक 2024 को आया था, लॉन्च हुआ था. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कब लॉन्च किया था उन्होंने. हेकेट का फारलाइट खेलो तो प्रॉब्लम, फारलाइट ना खेलो तो प्रॉब्लम. कुछ तो फारलाइट वालों ने हेकेट के साथ किया है, इसके लिए वो आता है सिर्फ ये बोलते हैं फारलाइट. फारलाइट तो उसको बोलने का तकलीफ है तो फार्टलाइट एंड चला जाता. फिर आई डोंट नो क्या है, बट वो जानता है. एनीवे, कॉड एम पीसी पे भी काम चल रहा है. तो इट विल टेक सम टाइम. ये सब टाइम लेते हैं, आराम से अपने टाइम के हिसाब से करते हैं. बट यो सर गार्टिक फ़ोन खेलने का प्लान है? फिलहाल तो नहीं. गार्टिक फ़ोन और थोड़ा बाद में खेलेंगे. थोड़े लोग भी होने चाहिए. 1-2 जन में क्या ही खेलोगे गार्टिक फ़ोन. और घुमा फिरा के तो ज़्यादा कुछ क्रिएटिविटी लोगों की अभी आनी भी बंद हो गई है. पहले पहले थोड़ा क्रिएटिवली कर रहे थे, फिर धीरे धीरे वो क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई. वो एक ही चीज़ या किसी को पकड़ के उसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना एंड ऑल, वो सब चलता है. तो मतलब रहने दो. लोग ज़्यादा रहेंगे एंड सही तरीके से खेलेंगे तो ज़्यादा मज़ा आता है. और ढंग से खेलते नहीं है फिर मज़ा भी नहीं आता. उस स्क्रिबल भी स्टार्ट किया था इनिशियली, सही खेल रहे थे. फिर स्क्रिबल में क्या हो गया, आता नहीं है तो वो वर्ड ही लिख देते थे. यहाँ चलो गैस करो. तो ऐसे कर करके. भाई ये क्या है, इतना मैसेज एक साथ, नोटिफिकेशन इतना सारा आ गया. अरे भाई भाई, देखना पड़ेगा.
बहुत सारे मैसेज आ गए। गार्टेक फोन, बाय द वे अर्नब वेलकम टू स्ट्रीम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। कैसे हो? बाय द वे स्वप्निल, कॉर्ड मोबाइल छोड़ के और कोई गेम नहीं खेल रहे हो या कॉर्ड का फुल लेजेंडरी ग्राइंड चल रहा है तुम्हारा कि लेजेंडरी और भी करवाना है? और कोई आ रहा है क्या लेजेंडरी फ्री में दे रहे हैं जो AK-47 जैसा? अरे सर ये IPL खत्म हुआ तो मैं दोबारा बोर हो रहा हूँ। पता नहीं ये टेस्ट सीरीज कब शुरू होगा। अरे हाँ, टेस्ट सीरीज का डेट 20 से 24 जून टाइम है इसको। मैं बोल रहा हूँ जब से इंडिया पाकिस्तान वाला कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना उसके बाद से ही मेरा मूड ऑफ हो गया IPL के लिए। IPL अगर उस टाइम पे भी कंटिन्यू रहता तो शायद मेरे में एक्साइटमेंट रहता, बट मेरा तो मूड ऑफ हो गया। ऊपर से ये जो RCB वाला वो कांड हुआ है वो तो और दिमाग खराब कर दिया उसने। 10 PM को लाइव रिएक्शन दे दो एक्सबॉक्स शोकेस का। देखता हूँ 10 बजे तक रहूंगा कि नहीं। मेरा भाई बोला था आज आएगा करके, वो टाइम मिलेगा तो वो आएगा, तो उतने तक रहूंगा कि नहीं या फिर वापस आके रिएक्शन देखना पड़ेगा। अच्छा, कौन कौन से ऐसे समर गेम्स हैं जो कल हम लोग ने नहीं देखे थे उसको देख लेते हैं चलो। उसको देखते हैं जो अभी तक नहीं देखे हैं, क्योंकि 50+ कुछ गेम्स हैं, मैंने देखे कम ही है कंपैरेटिवली, बट अच्छे वाले शायद देख लिए होंगे। लेट्स सी। डिस्प्ले कैप्चर चल रहा है क्या? नहीं ना? ओके। ये अंदर ही अंदर क्या चल रहा है? गेम पेस 2025। वुचैंग, हाँ वुचैंग का अर्नब ने मुझे बताया था पहले एक बार। बस एक बार देख लेते हैं। ओके एक मिनट, मुझे साउंड ही नहीं आ रहा था। घूमने जाओगे ना इधर? माफिया न्यूट्रल का रिएक्शन दो। देखा तुम्हारा वाला उतना कुछ खास तो नहीं Really लगा what you wanted. Fate is all set in stone. You can't स्टोरी जब change how अनफोल्ड it होगा तो ends. पता चलेगा। माफिया में हमेशा से एक उनका एक रिचुअल तो रहता है। ये तो वुकोंग जैसा ही है, इससे नाम भी उन्होंने सिमिलर टाइप का रखा है। ये जापान में सेट है क्या? दिखने में बहुत सुंदर है लेकिन। What will it take to finally awaken you? ये प्रोटैगनिस्ट है क्या? नथिंग इज फॉलोड। ये जापानीज है ना, वुचैंग फॉलोइंग करते हैं। माफिया वाला तुम्हारा वाला ही देखा था मैंने। इस समर गेम फेस्ट ये वाला लाइन से देखते हैं। ये देखा था
एटॉमिक हार्ट्स 2 वापस से देखते हैं भाई, बहुत बहुत तगड़ा लगा मुझे एटॉमिक हार्ट्स 2। मनफिश AK-47 लेजेंडरी तो है ही, प्लस पिछले सीजन से ही M4 लेजेंडरी ब्लैक गोल्ड रॉयल भी ग्राइंड चल रहा है, हर सीजन 20 शर्ट्स बाय करना होगा। अच्छा, टोटल 100 शर्ट्स चाहिए लेजेंडरी M4 ब्लैक गोल्ड रॉयल क्लेम करने के लिए। माफिया में उन्होंने गेम प्ले कुछ दिखाया नहीं ना, वो इधर से ये काटता है और थोड़ा बहुत उन्होंने शायद पहले भी दिखा दिया था, हाथ में जलता हुआ जो मदर मैरी वाला फोटो है वो सब। यहाँ पे वो लिफ्ट में ऐसे काटता है, वो खून वहाँ पे रखता है, फिर उसको चलाता है। ये मुझे बहुत सही लगा, थोड़ा वेस्टवर्ल्ड टाइप, ये मतलब वेस्टवर्ल्ड टाइप का सीन है। It is said, if they were out there, they would have visited Earth. बहुत सही लगा ये वाला। My answer is, maybe they will visit us. But time has not come yet for this. गाड़ी का कॉन्सेप्ट बहुत सही था। The era of atomic heart. और एक गेम आया है कल हम लोग ने देखा था, जो कि एटॉमिक हार्ट्स के ही यूनिवर्स को बिलोंग करेगा, उन्होंने लिखा भी था। अच्छा हाँ, अरे यार ये म्यूजिक चलेगा, म्यूजिक पे मुझे कल कॉपीराइट आ गया था, सॉरी गाइस। म्यूजिक बहुत जबरदस्त है बट चला नहीं सकता, कॉपीराइट आ जाएगा। अब ये कुछ सेकंड जो चला उसमें ना आ जाए, वैसे कुछ दिक्कत नहीं है, उसको ये कर दूंगा, म्यूट कर सकते हैं, सिर्फ सॉन्ग को म्यूट करने का ऑप्शन है। ग्रैपल भी है, वॉल रनिंग भी है, उसके साथ साथ शूटिंग भी करना है, थोड़ा ये एलियन वेलियन भी डाला है, रोबोटिक्स भी डाला है, थोड़ा सुपरनेचुरल वाले भी कुछ एलिमेंट है क्या? ये फर्स्ट, अरे ये वाले ये सब थोड़े से मैच्योर रेटेड। पैराशूटिंग का भी पॉसिबिलिटी है, गाड़ी भी चला सकते हो, ऐसे भी शायद कंट्रोल कर सकते हैं। डॉल्फिन के सर के ऊपर क्या डाला? हार्ट्स 2 डाइंग लाइट भी देखा था, डाइंग लाइट भी सही लगा। अच्छा कल सोनिक नहीं देखा था, बट सोनिक में बहुत सारे कैरेक्टर्स उसे ऐड किए उन्होंने, ये देखना था। स्टोरी ट्रेलर था, हाँ स्टोरी ट्रेलर तो था, बट आई वाज होपिंग कि ये गेम में बताते तो ज़्यादा बेटर रहता, rather देन ट्रेलर में ये सब बताना। ट्रेलर ऐसा हो कि ग्लिम्पसेस मिले बट कुछ समझ में ना आए। मैं हमेशा से ही ये कहता हूँ, कोई भी चीज़ का अगर पहले ही तुम्हें समझ में आ जाए क्या चल रहा है, यू आर अनसक्सेसफुल एट दैट। तो मुझे देख के जानना है एंड आई वॉन्ट टू गेट सरप्राइज। बट ये मारियो कार्ट का ही सब्स्टिट्यूट है, हात्सुने मिकू, ये कोई एनिमे की कुछ है, लोग पहचानते हैं। ये लाइका ड्रैगन वाला कैरेक्टर है, इचिबान कासुगा। अर्नब तुमने खेला है ना ये वाला, इस वाले का? ये भी कोई एनिमे कैरेक्टर है शायद, जोकर। वो माइनक्राफ्ट वाला स्टीव भी है। बेसिकली मारियो कार्ट अगर खेला रहेगा तो सिमिलर टाइप का ही है, बस उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐड किए हैं, स्पॉन्ज बॉब वगैरह भी मिलेंगे। जो माइनक्राफ्ट का स्टीव भी है, माइनक्राफ्ट की दुनिया भी है।
Drifting across dimensions soon. वैसे चेंज होते रहेंगे डायमेंशंस, जिसको देख के लोग एक्साइट हो रहा है। मारियो नहीं खेला, मारियो कार्ट बहुत पॉपुलर है, रेसिडेंट इविल था, ये भी जैसा कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए बहुत सही लगा ये चीज़ कि हाँ थोड़ा बहुत वो हॉरर के ग्लिम्सेस वगैरह तो मिलेंगे, बट क्या चल रहा है वो तो गेम खेल के ही पता चलेगा। इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आया, इसलिए मैंने इतना देखा नहीं। मॉर्टल क्रिम भी पता नहीं, शायद इतना मन नहीं करेगा। हाँ, मॉर्टल शेल 2 भी बहुत सही लगा, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत अच्छा ट्रेलर बना। You think you're the harbinger? You might be. गाना एकदम खतरनाक वाला लगा था। मॉर्टल शेल मैंने क्लेम नहीं किया, खेलूंगा नहीं, क्या करूँगा। They know naught of your nature. You're a weapon, child. स्वॉर्ड ओनली गेम से इन्होंने ऐसे शूटिंग मैकेनिक्स भी डाल दी, शॉर्ट गन जैसा। अरे भाई, They'll worship you until you fail. Then what? You're their god. looks interesting. Parrying, dodging mechanics तो definitely है ही, और brutality. Bring the eggs back to me. हाँ, ये Atomic Hearts Universe Is it recording? Yeah, it is. ये ठीक ठाक लगा यहाँ से। What if the cube didn't appear but revealed itself? What if it was always there and we've only just started to see it? पोर्टल के थ्रू जाना एंड ऑल। दादी माँ भी फाइट करने पे वेपन कस्टमाइजेशन बहुत दिया है। क्यूब एटॉमिक यूनिवर्स, कोड वेन 2 एनिमे टाइप्स वो है, इनको देखना है। डेडपुल बाद में देख लूंगा, ये उतना कुछ खास नहीं लगा। ओनिमुशा लास्ट हम लोग ने देखा था, ओनिमुशा लुक्स गुड। This isn't hell or my world. What is this place? इसमें पैरिंग मैकेनिक्स वगैरह भी है। एंड अगेन इसमें जो ब्रूटैलिटी बोलो या फिर जो क्या बोलते हैं उसको, जो लिम्ब जिसको पूरा काट दे, वो गोर वगैरह बहुत कुछ है। Not enough. I need more. ये पैरिंग है। Musashi! We both want the same thing, Musashi.
But there's Yo, only Ari, room for welcome one back. at the top. Welcome to and stream, it won't by the be a way. coward who runs from jewels. Thank you so much for joining. What Be never back. did work Super between Shark, us, welcome to did stream. Yeah, Onimusha. Sasaki Ganya. Onimusha, Way of the Sword. This also looks quite good. Mr. Goa animator, welcome to stream. Silent Hill F देखो. देख लिया है? देखता हूँ अभी लाइन से आएगा जब. Hello Shamik sir, hello Mr. Goa animator. Thanks. Stranger than heaven. Ryuga Gotoku Studio, 1943. I've been running, no words to speak. It's time I close Hard my roads. eyes till the Show him mercy, show him no mercy. Got a name? Mako. Daito. Daito. A Jap then, huh? Don't I look like one? You're not? So, what are you then? Sana. 俺が知りてえや。 Project Century. Stranger than heaven. This looks like a mix of Sleeping Dogs and maybe Yakuza. Felt that this I have seen already. Death Stranding 2, okay. This is also something that I feel would be interesting. Hey, I'm Mr. Go Animator, Arnab and Peeps. Hi, Harry. I am yet to complete Death Stranding. I have to complete that. But I saw the previous trailers of Death Stranding 2. It looks amazing. Welcome. Have a seat. Over here, please. No smoking, please. So you're Neil Varner. Lucy, Alisa Young. What do you do? Luca For the- Marinelli. I'm a porter. So thank you. We're good for the day. Okay. Thanks. Neil. What? So you made it then. Sorry. You really don't remember me.
I don't understand what is going on. Maybe the reference is there in the first game, maybe not. I think this was something that Shivam was suggesting. Oh. Looks pretty disgusting. What the heck? It is giving some Resident Evil type vibe. That kid zombie or whatever it is, he just kicked it into the scans. Silent Hill F देख लो अब. Okay, देखेंगे. Hill scary है. हाँ, scary तो है, but you have a lot of gameplay there, ना? Gun से मारो, shotgun मारो. अच्छा, guys, give me 2 minutes. I have to administer medicine to my mom. But that last part was very funny. You can just kick that kid zombie into the scans. Arc Raiders. Breathe. Let your body settle into a slower rhythm. There are other trailers of Arc Raiders as well, if I remember. Clear your mind of all distractions. You don't have to walk this path alone. Surround yourself with resourceful friends. Unknown Arc Raiders only. Here,
You are in control. Mafia, the old country. Betrayal burns because it can only come from someone. Sometimes the client is feeling less than cooperative and we need... This I think they have already... Stays between me. Because it can only come from someone close. An enemy can't hurt you like a friend. 2K, Hanga 30. Who are you? Sono Enzo. I work here. My friends, my family, my beautiful daughter, Isabella. Don Torrisi looks out for people around here. Sometimes the client is feeling less than cooperative and we need to, Teach them a lesson. remind them of their obligations. This is between us and Spadaro. Where I come from, commitment means everything. If this is how he wants it, this is how it'll be. The Dons noticed you, Enzo. This is an opportunity. Do you wish to commit to this family? ये वाला जो तुमने डाला था वही वाला देखा था. Enzo! We can't let them get away! When Isabella became involved, it became our business. He died for my father, for his honor. I won't let you do the same. We have a traitor. This stays between me and you. So this mafia is going to be like Among Us. Everything. We do not always get to choose what we do. There is an We can imposter choose who among we are. And who are you, Enzo? Mafia, the old country. I am a bit skeptical as to what they are going to showcase and how the gameplay is going to be. Like the previous Mafia games, at least 1 and 2 that I have played, I know that how it was some kind of a normal guy who became Mafia because of the circumstances. Consumed by the void. No, Odyssey. When the void calls. Try as I might to quell their advance. 'Twas all for naught. Heroes must fall. I am In a not finding faraway this land of magic. not that much interesting. Lies of P Overture. This is the DLC that I think they have launched. This is also part of Lies of P. Looks interesting, but I haven't played Lies of P still.
Wu-Tang, Rise of the Deceiver. They're out there. All gotta rescue mom. This is what we gotta protect. We cannot choose when people's dreams get snatched up out here. Find Inspector Deck. Find Rizzo. Find Master Kill. Find Jizzle. Find Method. Find Rico. You find Calico. Find Ghostface Killer. Where is the Wu-Tang Clan? Find them. Rise of the Deceiver. What? Presented by Ghostface Killer. AOD, Angel of Death. We altered the course of nature. Unleashed genetic power Arnab, across Jurassic World continents. Evolution 3. Pre-alpha in-game footage. It is up to us to nurture what we have set free, to find hope within this chaos. Well, to help life find a way. Jurassic World Evolution 3. This is like a park management sim. Coming 21st October. Epic Games Publishing. Captured on PC. Mix of development footage, gameplay and cinematics. Section 9. End of Abyss. Acha, isometric kind of a okay, I had seen this. This has been made by those guys. The people who developed Little Nightmares. Little Nightmares 1 and 2. End of Abyss. There's something rotten at the heart of Mouseburg. Crooks beware! Detective Pepper's in the house. There are those who would bend the city to their will. Dumb wise guys and fake cheese wheels. And those who do anything to save it. They won't even know what hit them. Oh boy. Roy Baker's Jack Pepper as PI for hire. Okay, interesting. Street Fighter. Until next time, Kenny. Is this in game? Let's rumble. The acting is pretty pathetic.
What is happening? Oh. Street Fighters, right? Street Fighter 6. That was crazy. Street Fighter 6. Okay, they have introduced some new characters into this, or new fighters. Hitman World of Assassination. Elusive target, okay. Your target is the elusive shadow banker, known only as Le Chiffre, a financial mastermind with suspected ties to the criminal underworld. He has arranged a high-stake poker game at the Casino Monarchique in Paris. Our clients have deemed this unacceptable. I've invited these people for a reason. I know their weaknesses. Hitman Mr. with Rengang, he's too 007 impatient, and Miss collaboration. Bai, well, Unexpected. she likes a drink. Don't know about the newcomer, Mr. Smith, though. He's the only wild card. Well, this is turning into an interesting evening. Welcome to the VIP room here at the Casino Monarchique. Reaper. Unusual name. Names are for friends. So Wouldn't you bias agree, Reaper. Mr. Le Chiffre? An ancient white castle deep in the mountains, lost to time and legend. Undetectable by satellite, Weirdo, not found on any map. Only the chosen find their way here. Gathered from every corner of the earth, divided yet bound. Wolves and lambs. Engaged in a perilous dance of wits, a game where truth is but a shadow. Killer Inn is a murder mystery action game. An asymmetrical team battle steeped in blood and suspicion. A handful of killers lurk among the horde of contestants, and the twist is, the killers lurk elusively in plain sight. Oh, hungry predators who could seal their fangs. Basically like an Hunt Among Us. down the lambs and the prize is yours. Oh, sacrificial children who serve as prey, unmask the wolves that prowl among you, slay them all, and the prize is yours. You must never forget, the hunter may become the hunted. Enough theatrics, I'll get to the point. Simply put, Killer Inn is an action-packed murder mystery, and remember, you don't know who's the killer. Kill someone, and a clue will remain. Hair, fingerprints, blood, clothes. Wolves can conceal clues left behind and act none the wiser as lambs. The lambs scramble to find clues, one step closer to unmasking the culprits. Who is guilty will eventually come to light, but you risk your life with every guess. It is forbidden for a lamb to harm another lamb. You wouldn't want to end up like this, would you? A flock of lambs united may best the wolves, but a lone hungry wolf could dominate the game. Lambs hunting wolves, wolves hunting lambs, 'tis a chaotic symphony of blood. One player falls, then another, and every time the prize money grows. Wolves win by killing every lamb. Lambs win by rooting out every wolf. Such simple rules. But there's so much more to this game of murderous mystery. Complete quests to level up, buy items with the gold you earn, loot chests for weapons and armor, chat in the comfort of safe zones, steal items, blow up opponents, poison others, place traps, trust and doubt, doubt and trust. Saved by your prime suspect. Discover one of your own is a wolf. Is killing not to your taste? Then you'd better escape the castle. Now the paths to victory are clear. You would do well to remember, deceit and deduction are your strongest weapons in this game of life or death. Your invitation awaits. This is an interesting game, but you need people to play with.
Acts of blood. Fajrul effect. They left me with nothing. No justice. No peace. Just names on the wall. The hunt isn't over. Not until I kill them all. Is it made by the people who have made Sifu? It seems like it. Yeah, the mechanics look quite similar. Rated M for mature. Dune Awakening. I'm not that interested right now. Mind's Eye. I partners. What are you doing here? Come with me. Okay, yes. This is something that was built by a First, I thought it was just broken synapses in my head. Keep your lights beat on. I haven't had company in years. I've been seeing things. Like a part of me that's been buried down deep feels like it's just knocking to get out. I'll be seeing you around, Charlie. Maybe this is the real you. Diaz, you were a good soldier. It looks like it had some influences from GTA, but the story could be quite different. I don't want any part of your future. There are some cyberpunk elements also from what I had seen earlier. Mind's Eye. Abishanka total overdose अभी कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिलेगा क्या? I don't think so. इसका एक ही तरीका है. ये ऑलरेडी देखा था. Fate is all set. हाँ ये ऑलरेडी देखा. आज ही देखा. आर्यन वेलकम टू स्ट्रीम. यो आ गया. मैं कैसे हो सब? एकदम बढ़िया है सब. First descendant. 2 दिन खेल के क्रिएटर के इसमें अप्लाई किया, छोड़ दिया मैंने. अरे यही सबके लिए ये ज्यादा चल रहा है. बढ़िया. तुम कैसे हो आर्यन? सिनेमैटिक्स अभी तो ऑलमोस्ट सभी गेम्स में बहुत बढ़िया लेवल पे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द अनरियल इंजन 5. अभी अनरियल इंजन 5.6 पे का भी डेमो दे दिया उन्होंने बाय शोइंग विचर 4. तो ग्राफिक्स तो बहुत हाई लेवल जा ही रहे हैं. ब्रेक थ्रू. लेजिट कॉपी मिलना मुश्किल है. वन पंच. इतना इंटरेस्ट नहीं. Peggy 18. Stranger Than Heaven देख चुके हैं हम लोग ऑलरेडी. What are we doing? Mixtape. Annapurna Hanging out. Okay. Getting buzzed. Let's see. I've got to get out of this place. Stray वालों ने जिन्होंने Stray बनाया उनका है. अरे. At the end of an era,
When everything's about to change, it's time to look back on your greatest hits. Mom, who is it? One moment. It's the pigs, darling. Shit! This year, experience a retrospective like no other. Beethoven and Dinosaur invites you to relive the teenage riot, to spend one last night together before school's out forever. And with a soundtrack this good, it's gonna be one hell of a night. ये सब सारे म्यूजिक बनाने वाले हैं. I love the Cure. Experience it for yourself. Mixtape. Nothing but the hits. फिर गाने वाने चलते रहेंगे. वो इतने सारे आर्टिस्ट का नाम जो लिया है. Out of words. Silent game. हेलो सर, मैंने एमुलेटर पे GTA 4 चलाया. अच्छा, कैसा लगा? चला क्या? कैसे हो? बाय द वे, फेनोमेनल. वेलकम टू द स्ट्रीम. A handcrafted co-op journey. Okay. For 2. Interesting. Don't you see? We can't. Come on, follow me. It seems like a mix of like inside Limbo and you can say It Takes Two or a Split Fiction. Fractured Blues. Serenity Forge. गेम्स तो एक से बढ़कर एक आ रहे हैं. बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव गेम्स हैं. I sit at the front of the dinner table where I used to be. My plates full. Plates of food. Plates of tomatoes. Plates of egg. Plates of It's a scary game. Plates of her legs. Beautiful. Broken. Plates of flowers. Plates and plates. The garden is lush and green, and everything is focused. Dinner's ready. It's like a scary game or something. There's a hunger that feeds and blooms, and I will feed, and I will bloom. पहले मिशन के बाद निको घर पे जाता है, वहीं पे जाके क्रैश हो गया. अच्छा, अभी सो के उठा हूँ. उससे 2 आवर पहले मैंने अपना फ़ोन अपडेट पे लगाया था. टोटल 2 आवर तक मोबाइल 68 डिग्री टेम्परेचर है. अभी मेटा फ़ोन. क्या बात कर रहे हो? मेरा फ़ोन? अच्छा, बिग अपडेट के नाम पे गरम कर दिया है. अच्छा, वो चार्जिंग पे डाला था क्या? चार्जिंग पे डाला था और साथ में अपडेट हो गया, तो इसकी वजह से बहुत हीट अप हो गया लगता है. नेक्स्ट देखते हैं. इन्फिनिटेसिमल. Mechanicals approaching. देखो ये सब बैकग्राउंड में छोटे हो गए एकदम. We must now face a stark reality. गार्डन में तो कौवा वगैरह भी है. But you are a small guy. Industrial civilization we were expecting to join.
is no more. Whatever it takes, we find a way. Infinitesimals. मुझे थोड़े दिनों पहले Android 15 का अपडेट मिला। अरे क्या हुआ? I trust you have seen it. A beautiful world. File not interested. Last flag. Okay. Yeah. Flag time, baby. Julia's ring! Get him, y'all. Alejandro. Why is it looking like Fortnite? Is it a Fortnite mode or something? Idea flag. 5v5 shooter. Why is it looking like a mix of Fortnite and Ark Raiders? 5v5. Adios! Wish list now. ये ज़्यादा नहीं चलेगा लास्ट फ्लैग MIO memory A rat in the vessel. Such a tiny nuisance. 2D platformer type है. Similar to like you can say Planet of Lana or Inside or Limbo, something like that. And don't come back. Play the demo now. Blade and Soul Heroes. Not that interested. It's Saturday night somewhere, so Silent Hill F आया नहीं खुद से. Official Japanese trailer. シュウ君、嘘ついてるよね。騙せてると思う？ひなこを。ひなこはね、死んだんだよ。सर जी आपने बॉन जोवी के गाने सुने हैं? ひなこはお友達といつまでも一緒にいたい。お友達は永遠じゃないのよ。彼らだっていつか必ずあなたを裏切る。あなたが裏切り者と呼ばれたように。 बॉन जोवी 15 साल पहले काफी फेमस हुआ करता था. उसके बहुत सारे गाने तो भी चलते भी थे. ごめん、何？何？天秤にかける価値があるかどうかしっかりと判断しなさい。थोड़ा अंग्रेजी में भी बोल दो. हम एनिमे नहीं देखते हैं.
ひなこ、いつまでここにいる気なの？自分でもおかしいと思うの。自分で自分がわからない感じ。自分の気持ちが自分で理解できない。私かお前の夢の中ってことはないよな。ひなこ、もう時間がないのよ。あなたが生かされたということは、ここに至ってもまだ迷いがあるということなのね。あなたがそれに悩める時間はもう尽きかけている。あなたは誰なの？さっきからなんで何もわからないふりをしているの？私はね、あんたをすぐに殺すこともできたんだよ。全部奪ったな。全部私から奪ったな。ये दूसरा ट्रेलर था क्या? पहला वाला मैंने दूसरा अलग ट्रेलर थोड़ा देखा था। それではお別れを。あなたが幸せをつかんでくれることを願っています。What the hell? मेरा ही स्ट्रीम मुझे दिखाएंगे समर गेम्स बेस्ट डिस्कशन। वाह भाई, मेरा ही स्ट्रीम मुझे दिखाएंगे समर गेम्स बेस्ट डिस्कशन। मेरा स्ट्रीम मुझे दिखा रहा है। मेरा ही स्ट्रीम मुझे दिखाएंगे समर गेम्स बेस्ट डिस्कशन। मेरा अब बार बार वही रिपीट होते जाएगा। मेरा ही स्ट्रीम मुझे दिखाएंगे समर गेम्स बेस्ट डिस्कशन। सही है, यही करो। अब बार बार वही रिपीट होते जाएगा। मेरा ही स्ट्रीम मुझे दिखाएंगे समर गेम्स बेस्ट डिस्कशन। सही है, यही करो। अब बार बार वही रिपीट होते जाएगा। मेरा ही स्ट्रीम मुझे दिखाएंगे समर गेम्स बेस्ट डिस्कशन। सही है, यही करो। अब बार बार वही रिपीट होते जाएगा। मेरा ही स्ट्रीम मुझे दिखाएंगे समर गेम्स बेस्ट डिस्कशन। सही है, यही करो। अब बार बार वही रिपीट होते जाएगा। किधर गया? हाँ, ये ओल्ड ट्रेलर है, न्यू गेम प्ले वाला देखो। न्यू गेम प्ले वाला किधर गया? हाँ, ये ओल्ड ट्रेलर है, न्यू गेम प्ले वाला देखो। न्यू गेम प्ले वाला किधर गया? हाँ, ये ओल्ड ट्रेलर है, न्यू गेम प्ले वाला देखो। न्यू गेम प्ले वाला किधर गया? हाँ, यही है ना?サクコ、どこ行くの？こっち通るの珍しいね。हाँ, मैंने ये वाला देखा था। 今は誰かと喋りたくて。私も後から行くね。うん。じゃあね。裏切り者。私の悪いおばあちゃんまでいないなんて、こんなの絶対に変。誰もいないし、気味の悪い怪物がうろつき回ってるし。いや、यही वाला देखा था।どこにいるの？
なくはいいよね क्या दोबारा आ रहा है 何でも持ってる हाँ क्योंकि मेरा ही स्ट्रीम मुझे दिखा रहे थे そんなあんたがいなくなってくれるんだからせいせいする一人は嫌だよ寂しいよずっと一緒だよって約束したよね暗いのは嫌 I hate the dark 一人ぼっちは嫌さあここये इसकी फ्रेंड रहती है शायद वही है। 裏切り者 ओ देखा है आओ ने आपने अच्छा हाँ हाँ वो देख लिया था ये वाला देखा था मैंने पिछले वाला नहीं देखा था और कोई ट्रेलर बाकी है क्या जो देखना बाकी है प्रैग्माटा भी देख चुका ऑलरेडी The future. It isn't just a dream. It's a promise. One we're turning into reality. With our third generation of Luna filament and advanced generative AI, we're reshaping the line between dreams and reality. We create life for our future. Delphi Corporation. Let's see about getting passed through to Earth. And why are these things trying to kill us? Good question. There you are. All better. You patched me up? I am DI-03367. They are pragmatic. Whoa, hang on a second. Don't you have a name or something? I'm good. Get behind me! I think I can help. Targets identified. Neutralizing threats. Neutralize us? Looks like we're gonna have to fight our way through. What the? Bypassing first and second firewalls. Hooking control protocols. Initiating hack. Pragmata. Hey, D.I. I said I am D.I. Okay. Look, how about we call you Diana? Diana? $2026 it's real. PlayStation. और कुछ देखना है क्या? ऐसा क्यूट एआई सबको पसंद आएगा. हाँ, फ्यूचर गेम शोज के ट्रेलर देखो फिर. फ्यूचर ये है क्या?
name is Laura Bailey, though you probably know me best from as Abby Anderson in The Last of Us Part 2, or as one of the cast members from Critical Role. Indeed. And I'm Matt Mercer, the man behind many video game chaos merchants, such as Like a Dragon's Mad Dog Majima and Ganondorf from Tears of the Kingdom. But if it's a Thursday night, I also moonlight as Critical Role's debonair dungeon master, where Laura tries her best to test the very limits of my abilities and sanity. And you love it. But we're here today joining forces for a very And like a whole bunch of world video today's show, then you can head to anything out of the Just want to do injustice. The sick. Zafar, pull up NavTech. Just the sick. Got it. Taki. आज UEFA National League We का gonna find out about final your है. Kopang right quick, okay? Portugal versus Just want to do Spain. एक injustice. साइड पे बड़े Stuck his neck out for us. Least we can do is get him out alive. and और We've एक got साइड big पे enough guns यमाल to make आज justice, all रात right? Oh, my watch God. party होने To वाला a man है. with a कोई hammer, आना just about चाहेगा? everything looks like a nail. Aim for show. Time to say oh yeah with our hammer. अगर कोई देखना चाहता है तो साथ में देख सकता है. Brace yourself. We're going for a spin. यमाल तो अभी स्पेन के लिए बहुत उसका नाम बन रहा है ना. नया फीचर होगा. मेसी रोनाल्डो लेवल का बनने वाला है. Zafar, did you get a signal? After the large haul down this corridor, they shut down this part of the facility. कितने Long साल का? time 16 before our साल का? arrival. Fine. Let's deal with those guys first. अरे सही है. एंटी ग्रेविटी शूज. They never look up. Zafar, you were right. They shut down this. Hold on, I'm coming! I'll cover you. The bird up high shall be thine eyes. What the hell happened here? Hey, buddy. Glad you're still breathing. What a way to start the show! The Expanse Osiris Reborn is an action RPG crafted in Unreal Engine 5, where you can immerse yourself in the universe of the beloved TV series. Make sure it's on your wish lists. Sounds pretty awesome. And we're treating you to another world premiere right now and swapping sci-fi for fantasy in the process. So let's take a look. ये कौन सा तरीका है पैसे कमाने का? वाइटी लाइफ पर कोड लगाने के 1 रुपये पेटीएम आता है. I used to swear. मतलब समझा नहीं मुझे. वाइटी लाइफ पर क्यूआर कोड लगाने के 1 रुपये का पेमेंट आता है. ये क्या सीन है जेम्स? By the way, welcome to stream. Thank you so much for joining in. मेरे इधर कोई क्यूआर कोड दिख रहा है क्या? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है. मैंने डाला नहीं है आज तक कोई क्यूआर कोड. और अगर दिखे तो कंफर्म कर लेना एक बार मेरे से कि क्यूआर कोड डाला है कि नहीं. किधर गया? By my father's oath.
To protect the wards is to protect our people. And if it claims our lives, what's one life lost for the sake of the many? And now, what do you swear by today? The only one that matters is my brother. And I will kill the people who took him from me. Seems a little like Witcher. Maybe a bit fast-paced than Witcher. ये मैं भी लोगों को पसंद ना है again because of a premium protagonist. Rin, take my hand. Rin! I hear not the clamor of conquerors. The pestilence must be purged. Your father was right about one thing. The wards are breaking. And should we fail, it may spell another end. Goes of the end. We're thrilled to reveal Echoes of the End, a narrative-driven fantasy adventure coming later this year. But the fun doesn't stop there. Here's another world premiere. It's important to note that this is your very first look at the game, but from what I can tell, there's evil residing in these woods. Pre-alpha में इतने सुंदर ग्राफिक्स, it is interesting. फाइनल फिनिश प्रोडक्ट होते होते फिर तो बहुत ही अमेजिंग लगना चाहिए. मैंने यूपीएससी का पढ़ाई कर रहा हूँ, डोनेट कर दो. मैं यूपीएससी का पढ़ाई कर रहा हूँ, डोनेट कर दो बोलकर लिखा रहता है क्यूआर कोड के नीचे. हाँ वो देखा है मैंने, रूम रेंट के लिए चाहिए क्यूआर कोड, पढ़ाई कर रहा हूँ. और वो कुछ पढ़ते भी है कि क्या करता है, बुक लेके घुमाते रहते हैं और क्यूआर कोड लगा देते हैं. देखा है मैंने वो. अब है बाहर शायद पॉपुलर हुआ ये सब करके, तो यहाँ पे भी लोगों ने चालू कर दिया. और बेसिकली क्या है, जिसके पास एक थोड़ा भी कैमरा है जिससे कि वो लाइव में कनेक्ट कर सकते हैं, कर रहे हैं. और देख रहे हैं कि भाई कुछ अगर पैसे मिल जाए, नहीं मिलेंगे तो भी ठीक है, मिलेंगे तो और भी बढ़िया. इससे ही धंधा चालू हो जाएगा उनका. Wake up in a forest with no memory, with no map and just a flashlight to light your steps, with the feeling you are always watched. The whispers are all around you. Try to remember find your way home. Whispers in the fog. बस इतना ही है. Producer developed by Pascal Escionti, Unreal Engine. An isolated cabin in the woods. What could possibly go wrong? That was your first look at Whispers.
in the fog. It's a psychological horror game from a supremely talented solo developer. Be sure to give it a wish list if you like what you see. And next up, we've got a trailer for an open-world action RPG based on the beloved anime, The Seven Deadly Sins. Let's check it out. Anime based है. फिर भी ट्राई करके देखते हैं कैसा क्या दिखाने वाला है इसमें. गेंशिन टाइप का ही रहेगा. दुनिया तो गेंशिन जैसे ही ऑलमोस्ट लग रहा है. थोड़ा मैं नहीं खेल रहा. And PS5, but you coming in season 7. Welcome to the future. Oh, finals, season 7. To the future of the finals. चलेगा क्या मेरे इसमें? The pressure's peaking. Every second counts, and these plays are next level. This is what the finals is all about. Split-second decisions, teamwork under fire. कल परसों में एक बार वापस से ट्राई करके देखता हूँ. फाइनल्स चल जाए तो मजा आ जाए. Strategy is to just hit your opponent really, really hard. बहुत क्रेजी लेवल पे चला गया ऐसा लग रहा है. जून 12. Season 7 of the finals launches on June 12th. And whether you're a seasoned veteran or a new contestant entering the arena, if you're tuning in on the FGS Twitch channel, you can earn a Twitch drop of this Kablamo grenade skin. Yes, anybody who watches this very show for 15 consecutive minutes on the FGS Twitch channel will earn the skin. So, if you've been with us from the very start, or you're just joining us, wherever you've been, then just stick around. Bird simulator with a herding later this year, but you can try guiding those. What's next, Laura? Sleep Awake, which is anything but cute. It's a first-person psychedelic thriller that explores the realm between slumber and death. This game is helmed by Corey Davis of Spec Ops: The Line and Robin Fink of 9 Inch Nails. Spec Ops: The Line तो बहुत बढ़िया है. मैंने सुना. मैंने खेला नहीं है, but उसका kind of spoil हो चुका है story. I cannot sleep. I cannot sleep. I must not sleep. Eyes Out. House Games. In-game capture. Somnological Institute. Come along. This way. Experience. Your waking nightmare. You are not ignoring me now, dear, are you? Looks interesting. From creative directors. Never heard about 9 Inch. Perfectly natural. I am awake. Resisting the inevitable comes at a cost. Not sleep. Give me your eye, dear. Sleep awake. Interesting. Sleep Awake is coming soon, so drop it on your wish lists. We've got a developer presentation for Ericsson, The Stolen Dream, up next. It's a cinematic isometric stealth game set in the year 1900. Oh, isn't that the year you were born? I am a few months younger than you, Laura. I don't think so. No. I must find her. He's all I've got. Version of the I'll should I make this look stat down in that you just draw. Even the stealth based है, but isometric में मुझे नहीं आता. A cel-shaded shooter with gameplay inspired by the Stalker series. The Explorator. Where you wield the power on
the road to launch. Constance is up next, a Metroidvania where you wield the power of a paintbrush to escape a decaying inner world. Live into my interests. Most exciting upcoming games, our ones to watch, you could say. First game we're tackling for the summer showcase is Titan Quest II. Now, fans have been waiting since 2006 for a sequel to Iron Lore's cult classic action RPG, and the good news is it's right around the corner. So let's dig into the details with the help of Grimlore Games. Make you a hero. Tell us the whole story. Tell us about hope. Titan Quest II is kind of your Diablo-esque immersion between Steam or the Epic Games. Titan Quest II is coming soon, and you can wishlist it on Steam or the Epic Games store. Wait, legendary actor Yuri Lowenthal? The Spider-Man to my MJ? What are you doing here? Hey guys. Hey man. I was just, wandering the sound stages, taking in the sights and smells, and then I heard you guys Spider-Man making noise about video games out here, and I thought I'd join in. Okay, well, I mean, since you're already here, why don't you take the next trailer? Well, right? I mean, if that's okay with you guys, I don't No, it's great. Work your magic. We'll just be over here. All right. Well, get ready, folks, because it's time for another world premiere. This one's a follow-up to a beloved puzzle adventure that launched back in 2020. 2020 में कौन सा puzzle adventure आया था, beloved? I have seen things that should be forgotten. Out of the blue. I've tried to escape my past. Dean of Archaeology. I've had enough of death and madness. But the world is changing. Some now search for answers in the far reaches of the world. For shocking secrets and dizzying marvels. For there lies upon this world of man a mocking and incredible shadow out of time. Call of the Elder Gods, starring yours truly, is a Lovecraftian narrative puzzle adventure coming soon to PC and consoles. So get it on your wish lists ASAP. So you weren't just wandering the lot then? I mean, I was, but then, it's called marketing, Matt. Yeah, Matt. Classic marketing. Classic. Anyway. All right, catch you later. Bye, I gotta wander. Hell yeah, thanks for coming, man. Bye. See you, bye. Okay, so while I go make sure there's no other voice actors hiding on set, we'll throw it out to some back-to-back trailers. I'll stay here. Read bio course. How hard could it be? Hard. We found Capture the flag of the flag. Who was? Let's haul ass. It's like capture the flag on crack. Ascendant. From the world. Welcome to Vale of the Witch. This whole not interested tight right now. backstabbing and back. Can anyone hear me? Dispatch to Unit 1. There's an ongoing fire. Unit 1 to dispatch. Copy. Is this a fire truck simulator or something? Break that door open! Sturdy Halligan first. Fire crew simulator. Catch fire! Get an attack line in there.
दोस्तों के साथ जाओ and make sure that you are That was close. stopping all the burning that is happening. Please, get me out of here. We Fire can't let the stations fire still- escalate like that. I need help. वैसे ये सब simulator अच्छा है. This can be a teachable Firefighting game. simulator. Firefighting Ignite. simulator. United against fire. Coming fall 2025. Wishlist now on PC So and consoles. this can be something which can help people get Are we aware all clear? about. No Nolan Norths or stopping Ashley fire. Johnson's waiting in the wings? No, I think we're good. Okay. Now remember, folks, you can find all those games as well as every game we feature today on the Future Game Show Steam page. Yes, and you'll want to prime your wish lists in advance for this next reveal. It's a game where you play as a bureaucratic inspector in a fantasy world. What, so like you make sure the evil layer is up to code before the party heads inside? Yes, that's literally the whole deal. Okay, I legitimately need this game. I know. Heroes. The world is full of them. Sons and daughters of farmers with too much bravery ये scene and में not enough मजेदार होगा. wisdom. So some say. हाँ ये मजा आएगा. ये What is educational a भी hero होगा. without अच्छा रहेगा a वो. princess to save? Without dragons to slay? Nothing. That's where you come in. As an Hip Plus agent at the Games. Bureau of Fantastical and Arcane Affairs, you will ensure everything is as it should be for the hero's arrival. Inside this cave, you'll find a Audit villains and their lairs. according to our reports, is a complete and utter embarrassment to the story. The book is titled Hell Gates Anew, Your First Ritual Sacrifice. As it turns out, putting the soul of a demon inside of a skeleton is a touch more tricky than you might imagine. We, the members of the United Builders Union of Enchanted Settlements, hereby announce a strike, effective immediately. It's the inspector, here with their cushy job and their clipboard that decides if we have to do more work. A dragon attack? That is not in the budget. But what is a story without a good hero at its helm? See the story unfold With as a one hero. unsanctimonious swing, you lop his head off. It hardly felt good, but incompetent evil is still evil. We are happy to welcome you, our newest agent to the cause. Wishlist the Bureau of Fantastical and Arcane Affairs today. Oh, that's one for the critters. The Bureau of Fantastical. This one's for the fans of shooters, anime, and Y2K aesthetics. That's me. 尽きるまでが弾が尽きるまでが愛よ TF Team Waifu. Moshi. Moshi. Hai. वो तो बच्चे एक्साइटेड हो जाएंगे इसको देखकर. Mirai Katsumi. Not that interesting. Waifu Tactical Force कुछ भी. वो प्रोजेक्ट मुगेन का क्या सीन है? प्रोजेक्ट मुगेन अभी शायद नाम चेंज हो गया ना, अनंता या समथिंग कुछ. Waifu Tactical Force is a 3v3 anime shooter coming soon to PC, but you can jump into the open playtest. Inspired by art of paper. Now we've got a trailer for an action platformer inspired by the ancient art of paper folding. Let's take a look at Hirogami. Hirogami. दूसरा कोई This is CCP Games Spacebound Survival MMO. दूसरा देखते हैं ये वाला. क्या
Black hole. Eve Frontier. eFrontier is an invitation for everyone that have had the idea in their brain to make a game. And often the best way to make a game is server employees or various. I'm not interested in that. Montage of exciting games that you can play on Steam, right, which is a future Steam or the Epic Game Store. But for now, let's keep it rolling with our Ones to Play section, which is a future game show staple. It's a montage of exciting games that you can play on Steam right after the show. So if you like what you're looking at, don't hesitate to download a demo and dig in. First up is Catastrophe. This is an action roguelike where you play as a kitty abducted by aliens and repel enemies with your trusty sidekick, the Star Cursor. Players can mod Polo's abilities to settle on a unique playstyle and pick their route through a series of interstellar environments. Next up, we've got Phase Zero, a survival horror throwback with fixed cameras and immersive pre-rendered environments. A menacing illness has descended on the town of Flint Peak. Can you solve puzzles and tango with monsters to make it out alive? Or what about Bloodgrounds? It's a glad carve your. Last but not least, we've got How to Escape, Lost Submarine. Boy is a work in progress. All footage is captured in Unreal Engine 5. Every voyage begins with a plan. Fire! Capstan. A vision etched on parchment, foretelling glory or downfall. It is in our nature to conquer what others fear. Death and dishonor, fame and fortune. The life of a sea captain is one of duty and relentless pursuit. True riches are not in gold and jewels, but in the stories we bring back and the legend we become. एक तो सही रहा है. We arrive, but never at our final destination. ये सब तो अच्छे ही दिखते हैं, but actual gameplay कैसा रहेगा? Next course. We sail. We fight. We endure. For the voyage is life. And life is the voyage. Ultimate. ये क्या ब्लैक फ्लैग से इंस्पायर्ड होके वैसा बनाने का प्लान कर रहे हैं? क्योंकि लोगों ने तो यही बोला था, स्कल एंड बोन्स नहीं चाहिए हमें. हमें ब्लैक फ्लैग जैसा कुछ चाहिए. Ahoy. Join the crew today on Kickstarter. And you can also wishlist the game on Steam or the Epic Game Store. The Spotlight montage is up next, so say goodbye to our corporeal bodies and hello to our disembodied voices. What Matt means to say with that gothic vocabulary is that we'll be back on stage once we've talked you through some super cool games. That's what I meant. Flickshot Rogues is a turn-based strategy rogue on Steam. Now let's take a look at Under Par Golf Architect. It's a hack and slash rogue. Ascends to Zero is up next. It's a hack and slash roguelike where you play as the last surviving human of a devastated world. To help with that unfortunate predicament, you can freeze time to anticipate attacks and topple voxel monsters. Ascend is drop door critters. FQH. Next up is Don't Wake the Beast, but the developers have sent over an intricate overview, so I'll sit this one out. Hi, my name is Timek. Is a to bring about the end out with worship, inspired by and recruiting followers. You have a survival shooter with poop mechanics. What? Not as in like they're bad, no. Just like you have to manage your bowel movements to survive. Oh, I might actually learn something. I love video games.
Peggy 18. ये क्या है? All of the negative reviews you are about to read are real and scum. I'd rather buy WinRAR. Killed by indestructible. Nobody wants to micromanage their poop. Movie again for Massachusetts. I didn't get it. 2166 hours played. Are you ready for some experience 1.0 coming 17 June? If those inspired reviews have grabbed your attention, then we're here to help. Yep, you can head to the link on screen right now for a chance to win one. Iron Man, welcome to the stream. Ola mola tula. सर जी क्या चल रहा फिर? ये क्या हो रहा है गुरुजी? मुझे कुछ ज्ञात नहीं हो रहा। आदरणीय गुरुजी, ये क्या चल रहा है? तुम्हारा क्या चल रहा है अचानक से? आदरणीय गुरुजी, ज्ञात नहीं हो रहा तुम्हें? शुद्ध हिंदी सीख रहे हो क्या? कोई कुड़ी मिल गई क्या शुद्ध हिंदी बोलने वाली? तुम्हें मोटिवेशन मिल गया शुद्ध हिंदी बोलने का? मैं बढ़िया हूँ ऐसे। मैन, तुम कैसे हो? कैसे चल रहा है सब? ये गेम का ट्रेलर वगैरह जो चल रहा है, आने वाले अभी जो गेम्स ये साल एंड अगले साल आएंगे, तो उसके ट्रेलर्स बताए जा रहे हैं। तो कुछ अच्छे हैं, कुछ उतने शायद मेरे पसंद के हिसाब से नहीं है, तो उनको फास्ट फॉरवर्ड करके वो गेम के ट्रेलर्स अलग अलग देख रहा हूँ। ये फ्यूचर गेम्स वाला है, समर गेम्स वाला भी था, बट ये समर शोकेस चल रहा है अभी, उधर समर पीरियड है शायद इसके लिए। ब्रेन रीसेट करके आओ लोहा। और तुम कैसे हो? कितने दिन बाद दिख रहे हो? कैसा चल रहा है सब? काम वगैरह बढ़िया सब? Of 100 keys for Scum 1.0. And if you're not one of the lucky winners, then you'll just have to jump in with the rest of us when it launches on June 17th. Now, our next game is a squad-based survival shooter where you dodge deadly dinosaurs. Here's the latest trailer for Deathground. Deadly dinos are on the loose in Deathground. Whether you dare to enter solo or in a squad of up to 4 players, you must do everything you can to survive in these dinosaur-infested abandoned facilities. Could you survive? Hi, we're Jaw Drop Games, the indie dev team behind Deathground. The main threat you'll need to avoid is the raptors, specifically Utah raptors. So unlike velociraptors, which are much smaller, they measure around 7 feet tall. I'm about 5'3", so that's a pretty menacing height comparison for me. We've spent most of our development time taming them, and it's been a huge challenge because... How do you get something that size with that tail to behave all in multiplayer? Exactly. Of course, there'll be other dinosaurs for you to deal with. The #1 culprit for causing chaos is the Compsognathus, aka the Compy. What might look like a decent hiding space for you as players might actually be a refuge for these little creatures, putting the terror in territory. As for other species, you may spot the Allosaurus, Brachiosaurus, and Triceratops roaming around in the background. And the next thing you know, you're being chased by a Tyrannosaurus Rex. There are multiple maps and missions that will be playable at launch. Mission Command, the single-player tutorial and introduction level. Geothermal, where you'll need to repair everything so you can start a power plant. Agricultural, which has become a little bit overgrown and it is in need of smoothing. And biomedical, which is my personal favourite, where you'll have to sneak in and steal raptor eggs. You know, for science. Each mission is replayable and is an important piece of the puzzle. Each detail or collectible that you come across will help you unlock the lore and discover the truth about the disastrous events of the past. Deathground is launching on Steam Early Access this year. Keep a lookout for our roadmap. Arnab का तो favorite है ये वाला. Deathgrounds. Deathground is launching into Steam Early Access later this year. Keep an eye out for Roar news on that front. I am refusing to acknowledge that pun, so let's move on with our second Ones to Watch deep dive, shall we?
Here's Rogue Factor to tell us more about the studio's new weird action-adventure game, Hell Death is Grounds Us. देख रहे हैं. Hell is Us तो अपना अर्नब भी खेल रहा था. मुझे ज़्यादा समझा नहीं. Hatred and lots of it. Hi everyone, my name is Jonathan Jacques Bellated, Demo, and I I am think the available executive creative है, director and executive art director on Hell is Us here at Rogue Factor. So the game that we've been developing for pretty much almost 5 years now is a game called Hell is Us. So the game is definitely like an action-adventure game. It is set in the world of Adia. It's a rogue state where there's a lot of really weird things happening. You play Remy. He was born there. Yeah, he was raised in a foster system in Canada and he's going back basically to find answers. This thing that games do now, contemporary games, where the adventuring is just, if you think about it, the exploration and the discovery, they're only there by theme. You had just been following marker after marker and until the last marker is over your actual thing you needed to find. Almost all the variables connected to the exploration and connected to your discovery are given to you in a silver platter. So we look at it kind of like the inverse in our game because we got rid of all these things. I remember chatting with John about the old Zelda games, how it was straightforward and like you had just enough to know where to go, but not too much. It's basically how life works if you think about it, right? We basically orient ourselves by sight and hearing and what people tell us, right? Right? Exactly, but I didn't because Us is coming to PC and consoles on September 4th. All right, I think we're due another world premiere, don't you? This one's an action-adventure set in a drop-dead gorgeous cartoon world. And it stars some very familiar faces. Wait, is it us? Maybe. Let's throw to someone who knows while I take this totally real phone call. Hello? Game वाली Abby का voice इसने दिया. Hey Laura, hey Matt. I'm super excited to be back on the Future Game Show where I belong, and you are doing a fantastic job. Like I said to the producers when I was hosting, if you strike me down, this is live, isn't it? So yeah, New Tales reached out and I am officially in their game. Actually, seeing you just reminded me, they're looking for a killer writer who can also perform. Let me call Jasmine. Look, it's fine. You're doing great for time. Hey, Jazz. Hi, Sam. I've got a really cool gig. Want to join me in a game? If we're both in, I'm pretty sure Matt and Laura will be on board too. Yeah, sure. I'll be in a game with you. But only if you're coming to the D&D group next week, because our party could really use the barbarian. All right. I guess we're all doing this. That was easy. So let's check out exactly what we're getting ourselves into. अर्नब भाई की भी सर जी वो गेम Hell is Us का मिनिमम रिक्वायरमेंट RTX 1070 8GB है. क्या बात कर रहे हैं? तो ऑप्टिमाइज बनाने वाले हैं. सही है. ये कौन सा गेम है? Let's go. ये मार्वल राइफल के वो जेफ द शार्क से कैसे इंस्पायर्ड होके जा रही है वैसा लगा ये जेफ द शार्क मार्वल राइवल्स में हवा में उड़ सकते हैं, पानी बन के किधर भी जा सकते हैं, गेट के आर पार जा सकते हैं. क्या ब्लैक भी हो सकते हैं, रेस बदल सकते हैं, ये नहीं पता था. फेडिंग एको. That's right, we're joining Samantha Bayard, yes, Karlak herself, and the awesome Jasmine Bhullar in Fading Echo, coming to PCs and consoles next year. And you can wishlist it today on Steam or the Epic Game Store. Go, 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 go! We got another block of back-to-back trailers up next. That looks nice, colorful. I will wishlist. Race बदल सकते हैं. हाँ देखा नहीं क्या? Suddenly. We have been blessed to live in times of peace, but our city is not without its enemies. The demons above
Inspired epic. And the beasts below. By the way, Ari, welcome back. Let's do this. एक Deathloop करके गेम है, उसको क्लेम किया है, कैसा है? Mechanics interesting है Deathloop के. It is belonging in the same universe as Dishonored, अगर Dishonored खेला है तो. And Dishonored is a top-notch game. Dishonored 1, Dishonored 2 and Dishonored 3, which is Dishonored Death of the Outsider. All the three games are really good. Even though Dishonored 3 is very much like a DLC to Dishonored 2, but it's a very good series. Deathloop is where you have to kill certain targets within a day, but you have to grind repetitively, you have to do things repetitively. Slowly areas will unlock, shortcuts will open, and then you have to plan in such a manner that everything happens within a particular day. So a day is like 24 minutes or something in Deathloop. So 24 minutes or 48 minutes, something like that. So within that 48 minutes, you have to kill 8 targets. But it is not that easy. Since there are many things that you don't know, so you have to play repeatedly again and again and again. And there is going to be someone who is going to hunt you. तो उसकी ex-wife शायद रहती है या wife ही रहती है जो उसको hunt करने वाली रहती है. So you have to stay safe and you have to kill those people within that time period. That is why every time you die or every time the mission fails, it is a loop again. So whatever you had discovered earlier, it remains open in the next loop. CM, एक minute. सर जी आपकी धोनी बहुत कम आ रही है. धोनी के बाद कुछ आया नहीं है मुझे. अच्छा आया सॉरी सर जी मुझे ऐसे इंटरव्यूज देने हैं, ऐसी फोटो दिखे टीवी पे, कैसे पहुँचे इस पोजीशन पर? गेम बनाओ अब बड़े लेवल पे, फिर अपने आप वो लोग अप्रोच करेंगे. ऐसे लेवल का कोई गेम बनाओगे तो डेफिनेटली पीपल विल सपोर्ट. लोल ये गाचा गेम न्यू. अच्छा सर जी वीडियो का साउंड थोड़ा कम कर दो, बहुत हाई है. ओके सर जी मैंगो जूस पी लो. नहीं मैं तो नॉर्मली मैंगो ही खा लेता हूँ, जूस अलग से पीने की जरूरत नहीं. ओ हिटमैन जैसा, हाँ सिमिलर बोल सकते हो, बट थोड़ा सा इसका मैकेनिक अलग है. थोड़ा आई थिंक सुपरनैचुरल एलिमेंट्स भी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जैसे डिसऑनर्ड में तो था, सेम यूनिवर्स में बिलोंग करता है. भाई मैं नींद में हूँ, आज छुट्टी थी, अब सो के उठा हूँ शाम में एंड सीधे तुम्हारी स्ट्रीम पे आया हूँ. अच्छा सर जी गेम कैसे बनाते हैं? मैं गिल्ली डंडा की गेम कंप्यूटर पर बनाऊंगा. देखो कौन से अभी आजकल चल रहे हैं, कोडिंग किस पे होती है, कैसे होता है, प्लान करो, डिज़ाइन कॉन्सेप्ट बनाओ, एनिमेशन बनाना पड़ेगा, बहुत कुछ है. छोटे छोटे तो बहुत डिपार्टमेंट्स रहेंगे. All things are possible. Let's move ahead. The arcade icon returns to the Xtreme. More stages to beat. Truxton Xtreme. Which game is this? अभी साउंड ठीक है वीडियो का? Okay, let's move ahead to the next one. Linked. We're back.
And you can wishlist all of those games by heading to the future. Let's throw it over to Supermassive Games to find out more. Supermassive Games. This is a big company, big studio. We are going to do this. Just lower the gun. Not until you move from the scanner. Okay, this is the new Captain Marvel, right? Those things can change shape. Don't you ever point that thing at me again. The concept seems very similar to The Thing. We need urgent assistance. Please. Directive 8020. But what if that went differently? Hey, I'm Will Doyle, creative director on Directive 8020, and I'm here to share with you The lead a new is the feature one that we've added for the who first time in played the Captain Dark Pictures Marvel game. in Turning Multiverse of Points Madness. is a new narrative system which allows you to go back and change the outcome of your choices. As with all our games, Directive 8020 has a branching story with multiple endings. Okay, so You'll be very able very to similar track to, the you can choices say, and paths that you've Detroit taken in Become the game Human. and see The same pathways and everything each of the that major you can see. decisions that you've made. So based on your With turning choices, points, you can things rewind will to a pivotal change. point or decision, collect missing collectibles, or see how different choices would have played out. By the same token, your actions matter in our games. If you want to live by your decisions, there's also a survivor mode setting that prevents you from rewinding, but still lets you view the decision tree. Turning points will be available both digitally and physically for all This is- copies this of the is game something from which when you can be start your interesting. very first mission. because choice based game is also there, and I think the gameplay also looks quite good. Directive 8020 हाँ सर introduces जी the ठीक है. ability to rewind. सर जी बहुत गर्मी है इधर, तो रास्ते बहुत शबील लगती है. शबील मतलब क्या होता है? शबील फ्री में शरबत रूह अफ़ज़ा बांटते हैं रोड्स पर, गर्मी में मजा आता है पीने में. बड़े शबील क्या होता है, किसको बोलते हैं शबील? फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ. इसमें सिल्वर पैलेस का शोकेस होगा? नो आइडिया, सिल्वर पैलेस के बारे में आइडिया नहीं है. एक्वा गोस्ट. हाँ सर जी ठीक है. सर जी रूमर्स आ रही हैं कि साइबरपंक एज रनर्स के रिलेटेड सुनने को मिलेगा एनिमे एक्सपो में. अच्छा, साइबरपंक का कुछ नया कुछ कंटेंट वाइज भी आ सकता है ऐसा बोल रहे हैं. साइबरपंक गेम में कुछ नया कंटेंट वाइज भी आ सकता है. एक बड़ा पैच वगैरह भी कुछ लेके आ रहे हैं, कुछ कंटेंट भी शायद ऐड हो सकता है ऐसा सुनने को मिला है. बट वो ट्रस्ट मी ब्रो वाला ही सोर्स है अभी भी, इसलिए गारंटी नहीं है. सीएम पढ़ लिया हाँ मैन. डायरेक्टिव 8020 ये तो महंगा लग रहा है. हाँ महंगा ही होगा. सुपर मैसिव गेम्स का है. सुपर मैसिव ने कौन सी गेम्स बनाए हैं? वेट एक मिनट. मैसिव गेम्स लिस्ट. अंटिल डॉन, हाँ. डार्क पिक्चर्स एंथोलॉजी, द क्वारी. हाँ ये गेम्स तो काफ़ी फेमस है इनके. द क्वारी, अंटिल डॉन, डार्क पिक्चर्स एंथोलॉजी, ये 3 गेम्स. ये सारे इनके चॉइस बेस्ड ही यूजुअली होते हैं. लिटिल नाइटमेयर्स 3 भी आ रहा है? क्या बात कर रहा हूँ, बढ़िया है. लिटिल नाइटमेयर्स 2 भी उनका था क्या? डेवलपर्स नहीं, लिटिल नाइटमेयर्स 2 उनका नहीं था. लिटिल नाइटमेयर्स 3 इनका आने वाला है. 2025 का ही डेट दिया है. तो ये बड़े लेवल का ही गेम होगा. हाँ बोल रहे हैं. अच्छा. Search Shabil in Punjab, you will know its tradition like langar, but we serve drink to people on roads as free, just like langar, but summer drinks. अच्छा, इस समर में तो बांटते हैं, यहाँ पे भी बांटते हैं, क्योंकि गर्मी में बहुत हालत ख़राब हो जाती है. तो जहाँ पे स्पेशली जो लेबर वगैरह वाला ऐसे सेगमेंट रहता है जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उधर ज़्यादा करके बांटा जाता है.
और बाकी मैंने यूजुअली इनको देखा है, जैसे मुस्लिम्स का रोज़ा के टाइम पे कुछ फ्री रहता है, कुछ शायद पेड भी रहता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट वो बांटते रहते हैं, वो पैसा वैसा बाद में मांगते, पहले बांटते, बाद में देखा जाएगा। शबील और छबील, अच्छा छबील इज अ पंजाबी वर्ड फॉर अ स्वीट कोल्ड बेवरेज ऑफन मेड विथ मिल्क, शुगर एंड वाटर एंड समटाइम्स फ्लेवर्ड विथ रोज सिरप और रूह अफ़ज़ा। ओके ओके, मिल्क शुगर एंड वाटर ही ठीक है, मुझे रोज फ्लेवर्ड मुझे उतना पसंद नहीं आता। सही है। भाई इसमें गाचा गेम्स का शो ऑफ नहीं है कि कौन कौन से आ रहे हैं, कुछ मैंने पहले ही देख लिए, ये देखो ऑलमोस्ट 1 घंटा 9 मिनट का देख चुका हूँ, कुछ शायद पहले आ चुके रहेंगे। मैं उतना गाचा गेम्स का फैन नहीं हूँ, इससे ज्यादा मैं देख नहीं रहा हूँ। To see the consequences in each branching path. It's coming to PC, PlayStation, and Xbox in 2025, and if it's not on your wish list already, go fix that. Our next game is just as scary, but for entirely different reasons. Cairn is a death-defying climbing simulator with a meticulous climbing control simulator scheme. We call a survival climber. ये जैसे जुसांट खेल रहा था अभी, and reach a summit no one has ever conquered. वैसा ही है। You can climb almost anywhere, and the climbing mechanics are highly realistic. You'll need to carefully manage your balance and stamina. Make a mistake, and you'll fall and get hurt. For the first time, we are also showing what it's like to climb at high altitudes. When you get up there, भाई जिनके पास पेशेंस है वो ट्राई करे ऐसे गेम्स and spikes. ये वाला तो देखो कैसे कांप रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं। Ice climbing is precise. You'll need to aim for cracks and edges to get a solid grip. Cairn's realistic climbing system also supports यहाँ पे तुम्हारा पानी, स्नो, that means you can have one end खाना कितना खाया है, and the other using an ice tool. It's up to you to read the rock face and choose the most strategic route to the top. Cairn is coming up on PlayStation 5 and Steam later this year. Aryan, thank you so much for joining in and becoming a first bencher. And PS5. शबील तो लस्सी जैसा लग रहा है। नहीं, लस्सी जैसा नहीं रहेगा, लस्सी से तो पतला ही रहेगा ना, लस्सी गाढ़ा है काफी। Later this year, and you can also check out a free demo on both platforms after the show. Wuthering Waves का कुछ बताया था। Double bill of trailers. Here are 2 great games from our friends at Quali. मतलब वो तो ऑलरेडी गेम आ चुका है, कुछ नया फिर कंटेंट वाइज होगा। यार ये वाली महिला कौन है भाई, उस लड़के के बगल में है? लड़का नहीं, आदमी है वो। ये है लास्ट ऑफ अस 2 में जो एबी है ना, सीरीज वाली नहीं है, गेम वाली, वो है। शिवम बूबा का तो न्यू इवेंट का ही बोला होगा। अच्छा, वुदरिंग वेव्स का, हाँ कुछ नया इवेंट का ही होगा, क्योंकि गेम तो आ चुकी है। जलंधर में कल बहुत जगह छबील का लंगर लगा था, तो मैंने 5-6 ग्लास पी लिए और पेट खराब हो गया। तो ऐसे जगह पे जिनको ज़रूरत है उनके लिए रखा करो ना। 1 ग्लास पिया फिर भी ठीक है, समझ में आता है। 2 ग्लास पिया फिर भी समझ में आता है। 5-6 ग्लास अलग अलग जगह पे। और स्पेशली जो बाहर का अगर नहीं, मतलब पानी वगैरह ज़्यादा बाहर का नहीं पीते हो या ऐसा कुछ रहेगा तो उधर और प्रॉब्लम्स होते हैं। वैसे मैं बाहर के पानी रिलेटेड चीज़ें ऐसे पीते ही नहीं हूँ। जूस वगैरह भी रहेगा तो वो ट्रस्टेड रेस्टोरेंट और वो सबसे मे भी ट्राई करूँगा, मे भी। ये कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा। Hark the goal and grounds. ये क्या है, चूहा सिमुलेटर? माउस सिमुलेटर? Not exactly a simulator. A mouse who suddenly became intelligent
and is able to climb and just glide around rather. So puzzles भी solve कर रहा है, वाह. Thor 5 is reportedly in the works at Marvel Studios. Taika Waititi is not expected to return as Hela director. is coming soon to PC, PlayStation, and Xbox. So give it a wish list on Steam or सुबह the से Epic शाम Games तक कोई भी पी सकता है और जितना मर्जी it's common here in summers. This is a नहीं ठीक है psychological thriller where the वो तो protagonist is ठीक है. trapped inside their own But home. always try And to we're keep about it for the find out people when who you can play actually it. need it. Peggy 18. पीने को मना नहीं कर रहा हूँ, बट हो सकता है कि तुम जो है एक्स्ट्रा जो ग्लास पी रहे हो, एक तो तुम्हारे हेल्थ पे भी इफेक्ट हो सकता है, उसके साथ साथ जिनको चाहिए रहेगा उनके लिए शायद कम पड़ जाए मे बी. What happens when everything starts to feel wrong? To see. मेरा डिग्री खत्म हो गया. अरे कांग्रेचुलेशंस. आ गया हाथ में सब. Like a trick. ये रिजल्ट वगैरह सब मिल गया. भाई फ्री की चीज अवॉइड ही करनी चाहिए. लिक्विड हो तो एकदम अवॉइड. पेट में जाके क्या ही कर देते हैं. स्टुअर्ट लिटिल सिमुलेटर. स्टुअर्ट लिटिल सिमुलेटर. फोन बजे जा रहा है. लूटो भाई. यहाँ पे लिटरली ले लेंगे फिर लूटना चालू कर देंगे. 22/7/2025. ये लोग एंड्रॉइड गेम्स का भी बताते हैं ना, बहुत कम मेजरली ऑन पीसी. पीसी गेम्स ही ज्यादा. पीसी गेम्स में इतने ज्यादा है. मोबाइल का तो फिर बाढ़ ही आ जाएगा. It's world premiere time again, and this next reveal arrives with an introduction from a very special someone. Hello everyone. I'm excited to be a part of Future Game Show 2025. Shuja Yoshida. There are so many amazing games coming. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. To reach. Dreams. भाई डिग्री नेम से तो ट्रॉमा आता है. 3 डिग्री के बाद भी जॉब के लिए जो लगी थी ना ब्रो, एक बार ऐसा लगता था कि क्या काम इस डिग्री का. लोगों का अप्रोच गलत है ना डिग्री की तरफ. दैट इज वाई कॉलेज भी ढंग से बताते नहीं है इसके बारे में. द अप्रोच फॉर डूइंग अ डिग्री इज नॉट ओनली कि यहाँ से मैं ये मार्क्स मुझे गैदर करना है, अच्छा रिजल्ट देना है. द मेन थिंग इज व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स यू आर गैदरिंग फ्रॉम योर कॉलेज एंड व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर गेटिंग इन टच विथ. मतलब अगर तुम्हारे कॉलेज में एक अच्छा नेटवर्क ऑफ लोग रहेंगे जो कि वैरायटी प्लेसेस पे सेटल हो जाएंगे, सो यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ having a network of people who are into various different companies, जिसमें तुम्हारे सीनियर्स हो सकते हैं, जूनियर्स हो सकते हैं. Reach is an ambitious virtual reality action adventure coming to PSVR, Steam, and MetaQuest in 2025. Okay, Matt. It's time to check in with everybody's favorite depressed and recently divorced duck. Oh, yes. It could only be the Duck Detective. He may have cracked the mystery of the secret salami, but when you're that good at your job, there's always a new case to solve. I'm used to the cold embrace. भाई सुनो ना, गवर्नमेंट कॉलेज में घंटा कोई सपोर्ट करता है. Won't be the end of me. मतलब समझा नहीं.
Hi, सपोर्ट तो कोई भी प्राइवेट कॉलेज में भी नहीं करता. We're Happy Broccoli Games based in Berlin, Germany. डिपेंड करता है तुम्हारा मेंटर अगर कोई अच्छा मिल गया तो. Where you are the one and only Duck Detective, a depressed and recently divorced duck who 3 must डिग्री crack भाई the कितने case. टाइम में खत्म हुआ? Inspect evidence, शिवम 3 make नहीं एक ही है. deductions, and solve this 5 no years. murder mystery. अरे नहीं To the नहीं मैं annoyance of एक्वा the duck गोस्ट से पूछ रहा था. detective, he is joined by a new partner in solving crime. Freddy the crocodile. स्टुअर्ट Work लिटिल together क्या to टाइम था unravel तब truth मैं and मौसी के nibble घर on the जाता crumbs था. of justice. छुट्टी के बाद वो मेरे लिए Right now, ओरिजिनल we're सीटी working लेके on a आते थे. simplified कब Chinese बनेगा language वैसा मूवी? update that is coming out later this काफी year. We're very excited काफी for साल you हो to चुके. play. मैं स्टुअर्ट The game is लिटिल out वगैरह on के बारे में Steam, भूल ही गया था. Nintendo Switch, उसका Xbox One, and Series कार्टून भी XS, आता था उसके and साथ साथ But how मूवी about भी our आया था. rhythm लाइव एक्शन 2 roguelike शायद from the मूवीज आए थे. maestros behind Patapon? Get on your dancing अच्छा. shoes, folks, because Ratatan is up next. आज वो चल जाओ. आज वो चल जाओ. साढ़े 8 का है. 8 तक हो गया. हमको दे यार. ठीक है. কি খাবে বলো? কিছু তো খাবে. ঠিক আছে. আবার তো আরো বেশি বিষয়টা দাম নিয়ে আরো দেখতে হবে. কিছু খাবে না. এতদিন তো মনে হচ্ছে বাইরে খাওয়াই ছিল. অলরেডি এটা দেখিয়ে দিয়েছে. সেটাই সবাই সাথে দেখিয়ে দিয়ে আসতে. বসো. आईटी में कौन सा फील्ड में जाऊँ मैं? जेम्स अपने कोई डोमेन एक्सप्लोर करा आईटी का. बीकॉम एंड सीएस का एक साथ किया. उसके बाद एमबीए. अच्छा. अरे नहीं मैं एक्वा गोस्ट से पूछा. ओके गाइस, आज मैं ना इधर ही खत्म करता हूँ. अभी भाई आया है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आया हुआ है. तो कल हम लोग बात करते हैं. ये ऑलमोस्ट कुछ 10 मिनट के ही रह गए. मेजर गेम्स तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. माफिया वगैरह थोड़ा बहुत कुछ दिखाया है यहाँ पे एंड की तरफ में. और हाँ, बाकी अगर तुम लोगों को कुछ आईटी वगैरह वो सब के रिलेटेड बात कर रहे हो तो डिस्कॉर्ड पे बात कर सकते हो. तो मतलब यहाँ पे अगर तुम लोग कोई बात कर रहे थे कंटिन्यू नहीं हो पा रहे तो डिस्कॉर्ड पे जाके कंटिन्यू कर सकते हो. और या फिर अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स शेयर करके बात कर लेना आराम से. वेल थोड़ा वेबसाइट डिजाइनिंग का एक्सप्लोर किया है. ओके गाइस, बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. मिलते हैं कल. देन सी यू लेटर. Take care, good night, and bye bye, guys. Bye bye, everyone. दूर है दिल में.
प्रोफेसर सौमिक है सुपर गेमर एपेक्स लेजेंड्स COD मोबाइल GTA 5 को जाने वो है गेमिंग के दुनिया का प्रोफेसर